Hello students, today we will learn about the rise of nationalism in Europe. जैसा कि हम 1830 के बाद दैट मीन्स 1830 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, नेशनलिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ग्यूसेप मेज़िनी उनके विचार क्या थे, व्हाट अबाउट द पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी एंड ग्रीस इनकी विशेषताएं क्या थी, एवरीथिंग वी विल रीड दिस पीपीटी. You can see here the Frederick Soro and his visualization. Visualization means what he has observed. Everything we will learn here. So, in 1848, Frederick Soro, a French artist, prepared a series of 4 prints. You can see here 4 prints. That means he is a artist and he has prepared 4 prints visualizing his dream for a world made up of democratic and social republic. So here your main things is what is democratic and social. Democratic आपको मालूम है कि आजाद रहना and social republic means whatever society will do as in the place of republic as he called them. The first print. Now, there is a 4 prints we have seen now. The first print shows the people of Europe and America marching in a long train. तो आपका एक प्रिंट क्या हो गया, ये हो गया, क्या है, यूरोप एंड अमेरिका लॉन्ग ट्रेन में मार्चिंग कर रहे हैं एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. और होमेज किसको ऑफर कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को. As they pass by it, a female figure carries a torch of enlightenment and one hand and charter of rights of men in the other. एक हाथ में उनका torch of enlightenment है और दूसरे हाथ में charter rights of men है. On the other lies the shattered remains the symbol of absolutist institutions. यहाँ है symbol of absolutist institutions. In Soro's utopian vision, the people of world are grouped as distinct nation, यानी कि अलग अलग तरह के, identified through their flags and national costumes, अपने अपने जगह के costumes and अपने अपने जगह के flag, और leading the procession are USA and Switzerland, followed by France and Germany. किसके साथ फॉलो कर रहे थे, फ्रांस और जर्मनी के साथ. Following Germany are Austria, Kingdom of Two Sicilies, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया. अपने अपने बुक में इनको नोट कर लीजिए कौन कौन से जगह थे. ये थे सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया. From the heavens above, Christ, sun and angels gaze at the scene. The artist symbolizes fraternity among the nation of world. Now the French Revolution and the idea of nation. That means now come to the pure topic of this chapter, that is the French Revolution of 1789 is the first clear expression of nationalism. Steps taken by French revolutionaries to create a sense of collective identity. Collective identity, underline this, among the French people. That means French people के भीतर जो भी identity है और क्या similarity and what they can able to accept. Everything we will learn about this. Ideas of Le Patrie and Le Citoyen, new French flag. This is a point number 1. Idea of Le Patrie and Le Citoyen, new French flag. Another ideas as given here. E-State General was elected and renamed National Assembly. That means E-State General. French Revolution में might be you have learned in class 9. That is a 3 E-State. That was a clergy. And other one is first E-State, second E-State. And everything comes like all people, those who are a lawyer, those who are a labor, doctor, engineer. They have categorized each and everyone in the E-State. New hymns compose the oath taken, centralized administration system, internal custom duties and dues were abolished, uniform system of weights and measures were introduced, French become the common language. That means इनके आइडिया एक नेशन, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के पीछे क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं. नए आइडिया है इनके, जैसे न्यू फ्रेंच फ्लैग उनका बन गया, न्यू हाइमन्स कंपोज हो गया, अलग से उन्होंने एक रिदम से पोएम बना लिया,
ओथ, इनका ओथ अलग हो गया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, इनका सिस्टम जो वो सेंट्रलाइज हो गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबोलिस्ड, इनके जो ड्यूज थे उनको हटा दिया गया, माफी कर दी गई। यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड, यूनिफॉर्म मतलब एवरीवेयर यूनिफॉर्मिटी वाज देयर एंड फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज, और उनकी लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच हो गई। अब नेपोलियन की बारी आई, ही रूल्ड France from 1799 to 1815 and gained absolute power in 1799 by become the first consul. This one you can underline, and so many points has given there कि नेपोलियन कौन था, उनका लक्ष्य क्या था, why he has come here and what is their main motto to declare himself, like नेपोलियन के बारे में जो भी है you can get deep knowledge from there, but these 2 points I have get from there, that is a he ruled the France 1799 to 1815. Then he has made the civil code. This is a very important civil code of 1804, Napoleonic code. This civil code is known as Napoleonic code 2. इसके अंदर क्या होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज स्टैब्लिश्ड। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, दैट इज अ इक्वालिटी। सिक्योर टू राइट टू प्रॉपर्टी, ये वाला दूसरा पॉइंट ले लीजिए। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो था उनका एकदम सिंपल वे में था, सिंप्लीफाइड था। एबोलिश फ्यूडल सिस्टम, यानी कि 4 पॉइंट इनका हो गया, फ्यूडल सिस्टम का एबोलिस्ट हो गया। फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, और ये भी एक नया मुद्दा आ गया कि फ्री पीजेंट्स को फ्री कर दिया गया उनके सर्फडम से और मैनोरियल ड्यूज से। Guild restrictions were removed, that also has been removed, and transport and communication system were improved. तो कहीं भी कुछ भी, कहीं का यातायात साधन जब तक सही ना हो वहाँ की आबादी सही नहीं हो सकती, so that they have done the transport and communication system also improved. Napoleon took away political freedom, increased taxes, imposed censorship and forced people to join French army. अब नेपोलियन का एक ही एम था कि पॉलिटिकल फ्रीडम करना, देन इंक्रीज टैक्सेस, टैक्स बढ़ाना, क्योंकि टैक्स नहीं बढ़ेंगे उनका खजाना तो ऑलरेडी खाली हो चुका था, और सेंसरशिप करना, पीपल को फोर्स करना कि फ्रेंच आर्मी को वो ज्वाइन करे। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म बनाने का जो मेन मुद्दा था, जो मेन कारण था, नो नेशन स्टेट्स वेर इन यूरोप बिकॉज ऑफ नॉट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर। कॉमन आइडेंटिटी एंड कल्चर ऐसा कुछ नहीं था। पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरिया स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो अलग अलग जगह में रहते थे वो अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते थे। हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मेगर एंड हाफ ऑफ द वैरायटी डायलेक्ट्स, एंड ग्लेसिया पीपल स्पोक पोलिश, यानी कि अलग अलग तरह के जो जहाँ पे रह रहे थे वो अलग अलग की भाषा बोल रहे थे। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, दिस इज एरिस्टोक्रेसी। द लैंड ओइंग क्लास, जिसके पास जमींदारी प्रथा जिसको हम कह सकते हैं। Spoke French connected by ties of marriages, numerically a small group, peasantry, majority of population. आप क्या करना, इनको एक फ्लो चार्ट करना and then just write a small group of person as numerically, then peasantry, then majority of population, and learn these keywords every time. Middle class, what is the condition of that? New social class emerged with the growth of towns and emerge of the commercial classes. टाउन का भी इमर्जेंस हुआ एंड द कमर्शियल क्लासेस भी बढ़ गए। एजुकेटेड क्लास वेयर आइडियाज ऑफ नेशनलिटी गेन पॉपुलैरिटी, यानी कि जो पढ़े लिखे थे देयर आइडियाज ऑफ नेशनलिटी गेन पॉपुलैरिटी, उनकी जो आइडियाज थी वो ज्यादा पॉपुलर हो गई, बिकॉज वो जो भी बात बोलते थे उनको लिखकर बताकर लोगों को मोटिवेट किया जाता था। What did liberal nationalism stand for? That is liberal nationalism. Liberal stood for freedom to the individual and equality before the law. ये हम लोग पढ़ते हैं कि ये आपका डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, they also give the same opinion about that equality for all before the law. So liberalism also stood for the same thing, freedom for individual and equality for all the law, and the end of autocracy and the clerical privileges. A constitution and representative government through parliament. In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market, abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capitals. This is very important, students. You can go through this. Economic sphere का liberalism stood for what?
the freedom of market, that means everything should be chosen by us कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, and the abolition of state imposed restrictions, state ने जो भी restrictions लगाए हैं उनका भी abolitions हो गया, and the movement of goods and capitals. Goods means the material what we are going to get, and capital the investment. Here जुल्वेरियन abolished tariff barrier, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है. इन्होंने क्या क्या किया, tariff barrier को हटाया, reduced the number of currencies to 2 and promoted a network of railways and stimulate mobility. एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए इन्होंने काफी आसान बना दिया. A new conservatism after 1815. Conservatism मतलब बहुत कंजर्व रहना, आपस में ही रहना, ज्यादा की ज्यादा मिलना जुलना किसी से नहीं. Believe that established institutions of state and society should be preserved. इसको बचा के रखना है. With the changes initiated by Napoleon. नेपोलियन ने जो जो चेंजेस दिखाए हैं उनको तो कंजर्व हो जाना है, कंजर्वेटिव हो जाना है और अपने आप में ही उनको बचाकर रखना है. सो अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव मेड द ट्रीटी ऑफ वियना. कब बनाया था, 1815 में. बourbon dynasty was restored to power in France. That time the Bourbon dynasty was there. This dynasty was not too strong. It is like weak section only, but it has restored its power in France. A series of states created on the French boundary of preventing French expansion in future. German Confederation was left untouched. Main intentions was to store and monarchies that had been overthrown by the नेपोलियन. इनका मेन इंटेंशन वही था कि फिर से सारे जो जो चीज एबोलिश हो गए थे उनको फिर से रिस्टोर करना और मोनार्की को भी लेना, जिसको कि नेपोलियन ने मोनार्की सिस्टम को हटाया था. ओवरथ्रोन द मोनार्कीज, दैट आल्सो टू बी रीगेन. आफ्टर दैट द रिवोल्यूशनरीज कौन थे, ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल forms that has been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. इसमें कौन है, ग्यूसेपी मेज़नी है. ग्यूसेपी मेज़नी के बारे में बच्चे आपके बुक्स में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बट आई हैव सेलेक्टेड टेकन अ वेरी सेलेक्टेड वन. तो आप वहां से भी पढ़ना एंड राइट अ पैराग्राफ एंड जस्ट एड दिस 4 लाइन्स डेफिनेटली. Born in Genoa in 1807, a member of secret society of Carbonari, founded Young Italy in Marseilles, Young Europe in Bern, believed in the unification of Italy into a republic. यानी कि ये कहाँ जन्म लिए थे, जिनेवा में 1807 में. ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी, ये सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी के मेंबर भी थे और यंग इटाली का भी इन्होंने गठन किया. एंड बिलीव यूनिफिकेशन ऑफ इटाली इनटू अ रिपब्लिक, इसको रिपब्लिक में गठन होना ही चाहिए. अभी हम पढ़ेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशंस. अब कौन कौन से टाइम तक, यानी कि 30 से लेकर 48 तक का टाइम जो है वो रिवॉल्यूशनरी टाइम में रहा है. इन जुलाई 1830 बोर्बोन किंग ऑफ फ्रांस वेर ओवरथ्रोन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड. Belgium broke away from the United Kingdom of the Netherlands. Greece, which had been a part of Ottoman Empire since the 15th century, struggled for independence. Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. यानी कि ये जितने भी आपके 4 पॉइंट्स इसमें हैं, everything है given a like brief note about how the revolutions take place during this time and what all changes has come. जैसे कि यहाँ पर बोर्बोन किंग फ्रांस का जो निकाला गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया था, उसी तरह से बेल्जियम टूट गया था, यूनाइटेड किंग का फॉर्मेशन हुआ था. ग्रीस which had been a part of Ottoman Empire since the 15th century struggle for independence, वो भी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था. और कॉन्स्टेंटिनोपल का जो गठन हुआ 1832 में, रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. The romantic imagination and national feeling, a cultural movement. Now you can see there the topic has given like romantic imagination. Imagination means thinking. Romantic means something romantic that we will read here. A cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment, criticized and glorification of reason and science and focus instead on emotion, intuition and mystical feelings. German philosopher John Gottfried Herder tries to discover culture among common people
through folk song, folk poetry and folk dances. अब यहाँ जैसे कि हम इनके कल्चर और सोशल के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से इनका गठन हुआ और कैसे इन लोगों ने अपने आप में परिवर्तन लाया. Hunger, hardship and popular revolt. In most countries there were more seekers of job than employment. Population from rural areas migrated to the cities to live in overcrowded slums. The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. In 1848, the population of Paris came out on the road and the Louis Philippe was forced to flee and National Assembly proclaimed a republic. उस समय में इनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी लुई फ्ली की एंड ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली. उनको चले जाना पड़ा एंड नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक. 1845 वीवर्स इन सिल्सिया led a revolt against contractor and 1848 the revolution for the liberals. The revolution was led by the educated middle classes who combined their demand for constitutionalism with national unification. Frankfurt Parliament on 18th May 1848. Members of political associations elected 831 representatives who took their places in the Frankfurt Parliament, convened in Church of St. Paul and drafted a constitution for the German nation. Just noted down this date, 18th May 1848. Members of political associations elected 831 representatives. How many? 831 who took their places in Frankfurt Parliament, convened that Church of St. Paul and drafted. उन्होंने constitution का एक draft बनाया that should be needed for German nation. It was opposed by King of Prussia and also lost its social basis as no right were given to worker and women. Same, the situation of workers and women during the French Revolution also was very terrible and now also the condition is same. It forced the autocratic monarchs to introduce some changes. Serfdom and bonded labor was abolished. Hungarians were granted more autonomy. The making of Germany and Italy. Germany, Otto von Bismarck, with the help of Prussian army and bureaucracy, took on the leadership of the movement of national unification. Noted down this one, very important. 3 wars over 7 years ended in Prussian victory and completed the process of unification. Kaiser William I of Prussia headed the new German Empire. And what about the Italy? This you have learned for the Germany. And Italy was divided into 7 states, which only Sardinia, Piedmont was ruled by an Italian princely state. Initially, unification program was initiated by Giuseppe Mazzini, but it failed. Chief Minister Cavour led the movement with the help of Giuseppe Garibaldi. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy. The strange case of Britain. In 1688, England established as a nation state. English Parliament seized power from the monarchy and the Act of Union 1707 resulted the formation of United Kingdom of Great Britain. This one noted down. In 1801, Ireland was forcibly taken by British after the failed revolution. A new British nation was founded through the propagation of dominant English culture. And here comes the visualizing of nation. Nation were portrayed as female figure, that is an allegory. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular women in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of nation to concrete form. In France, the allegory was christened as Mariani, and Germany, Germania become the allegory. And nationalism and imperialism. The Balkans comprises modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro. Balkans was a region of geographical and ethnic variation, was under the control of Ottoman Empire. The idea of romantic nationalism made this region very explosive. The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of each other. European powers were also looking for the extent of their control over the area.
This led to a series of war in region and finally resulted in the First World War. Thank you, children. I hope you have understood so many things here, whatever has pointed given. We will meet again with another video. Thank you.